Manchester United have finally moved in the window. They just put in a third bid for Bryan Mbeumo. Iski base fees around 65 million and 5 million add-ons, making it to around 70 million. And honestly, I think this is a really good deal for Manchester United. एक बंदा आफ्टर Matthias Cunha जिसके खुद इतने ज़्यादा goals थे. Bryan Mbeumo comes to Manchester United, if he moves to Manchester United, with 20 Premier League goals, around 8 assists, which I think is a fantastic season from Bryan Mbeumo. Same with Matthias Cunha. Ye goals are very necessary for Manchester United, जिनके last season forward options were Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, ब्रूनो जो गोल्स मारता था, अमाद जो क्रिएट करता था, एंड कभी कभी मेसन माउंट एंड कोबी मेनो जो आगे थोड़ा थोड़ा खेल लेते थे. बट द गोल्स फ्रॉम Mbeumo एंड कुनिया विल हेल्प यूनाइटेड अ लॉट. उनके अटैक को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, स्पेशली जिस तरह से उनका लास्ट सीजन गया था. आई थिंक दीज आर वेरी वेरी गुड additions to Manchester United. Now, I made a tweet which said this should happen now, but I feel it's a United tax window. Now, let me be clear, I still think this is a crazy price, but what else is not a crazy price? अगर आप Elanga को देखो, I honestly don't think Elanga is worth 55 million. I don't think that Noni Madueke is worth 48 million either. I also don't think Jamie Bino Gittins is worth whatever Chelsea is paying him. Probably Morgan Gibbs-White I can rationalize because he's young, England international and everything, and this guy can play multiple positions. It's pretty instrumental for Nottingham Forest. But that aside, I think that's just the nature of the window now. कि सबको थोड़ा पैसा extra देना पड़ेगा. I'm not a fan of it, but I guess if you want your players now, ये है. But I called it a United tax window rather than this as a United tax signing, is because what I was under the impression of, जितनी मैंने reports पढ़ी थी, एक I think Ben Jacobs की थी या फिर एक ब्रीफिंग हुई थी, दैट यूनाइटेड वांट टू डू बिजनेस इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे, कि जो उन्होंने पहले पास्ट में मिस्टेक्स करी थी जहाँ पे वो मुंह बोली कीमत दे देते थे इवेंचुअली, वो इस बार ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं. एंड इसका अच्छा प्रेसिडेंस भी था ना. इफ़ यू रिमेंबर इस ट्रांसफर विंडो में अर्लियर व्हेन चेल्सी वर लुकिंग फॉर अ गोल कीपर एंड दे वांटेड माइक मैन्योन, दे डिडंट वांट टू पे बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट फॉर माइक मैन्योन, जिसका लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड एवरीथिंग. So when Milan wanted more and Chelsea wanted to give less and that deal didn't happen, they walked away. And that has actually been a strategy for a lot of clubs, in fact, this window. I think अगर आप देखोगे कि आज रिपोर्ट आई थी that Arsenal were in for Palhinha but deal never agreed, so we moved on, got Christian Norgard, that was fine. You see this all the time with Liverpool as a selling club, as a buying club as well. You see this with Manchester City so many times. And I think the reason I called this a United tax window is because if United had held firm in their valuation, I personally think ऐसा हो सकता था कि Mbeumo उनको अपनी ही valuation पे मिल जाता. But if they had walked away, I think बाकी टीम्स को भी एक मैसेज आ जाता कि यूनाइटेड को आप मुंह बोली कीमत नहीं मांग सकते. Now United is gonna be very mindful about the finances of the deal. But now, if they have decided कि नहीं 70 million is finally worth it, whether it's because the visa news or because that's what they always believed his true worth is, either way, United have their man. The only thing is, what do United do next? Because Mbeumo आ गया है, that is good. He was their number one target for that right 10 position or a right forward position, whatever you want to call it, in that Amorim system. Now, they need a few more places to fill. I think they need a midfielder on priority. They need a goalkeeper to replace Onana. And they need a striker. Now, depending on who you are, ये order of priority change हो सकता है. Some people want a striker first because goal scoring has been an issue at Manchester United. Some people like me, if you ask me, I think United should prioritize a midfielder because आप कैसा भी attack रख लो, अगर आपका pivot बहुत weak होगा, वो चलने वाली बात नहीं है, कंसिडरिंग कि बाकी टीम्स के पास और कैसे मिडफील्ड है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रूनो इज अ ग्रेट प्लेयर बट ही इज नॉट गुड इन दैट पिवट पोजिशन. उसको आगे खिलाओ, ठीक है. एंड उगारते एज गुड एज ही इज कैन नॉट हैंडल द इंटायर मिडफील्ड बाय हिमसेल्फ. सो यू नीड समबडी लाइक बलेबा, यू नीड समबडी लाइक एडिसन, you need somebody like even a cheaper option like Douglas Luiz or Palhinha. They're not ideal, obviously. कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, परफेक्ट सिर्फ बलेबा ही है. But you need a midfielder in United right now. Some people will be like, हम डिफेंड बहुत अच्छा करते हैं, विच यूनाइटेड डू टू बी फेयर, बट ये गोल कीपर हमें बहुत गोल्स कंसीड करवाते, सो वी नीड अ बेटर कीपर, विच इज़ वाई यू सी लिंक्स विद एमी मार्टिनेज. अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा था तो मैंने देखा कि बेंजामिन सेस्को इज ऑल्सो लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. नाउ इफ सेस्को की प्राइस रिमेन्स द सेम व्हाट लाइप्जिग वाज आस्किंग आर्सेनल,
I think United might struggle to meet that valuation, but if they do meet that valuation, again, सेस्को इज अ गुड साइनिंग. आई थिंक अगर आप अमाद को देखोगे एंड आप डोरगू को देखोगे, वो जितना क्रॉस करते हैं, मे बी सेस्को बिकम्स द राइट गाय टू क्रॉस टू, बिकॉज हॉयलैंड सो मेनी टाइम्स गेट्स इन टू गुड पोजिशंस बट कांट रियली फिनिश. So Sesko, as a tall, lanky tractor kind of guy, he can be the one to head the ball in जब अमाद क्रॉस करता है या फिर जब डोरगू क्रॉस करता है या मे बी जब अम्बोमो एंड कूनिया चांसेस बनाएंगे, दे कैन प्ले ऑफ सेस्को somebody like him. But then if you run out of money without, जितना हम सुन रहे थे कि यूनाइटेड में पैसों की प्रॉब्लम है, what do you do about the midfield position and the goalkeeper position? So the signing can be right, but resource allocation में अगर एक जगह कमी पह जाती है, then United का squad बाकी जगहों में weak रह जाएगा. Which is why I think United should prioritize, personally for me, a midfielder after Bryan Mbeumo rather than go for a striker. Striker can come after a midfielder मेरे हिसाब से, but that's all on United. Now what does Bryan Mbeumo bring to Manchester United? I personally feel Bryan Mbeumo brings goals and assists. That is इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा गोल्स एंड असिस्ट्स ही चाहिए. ब्रायन एम्बोमो आई थिंक एक ब्रेंटफोर्ड के लिए जिसको रिप्लेस करने की जरूरत थी एंटोनी को, ब्रायन एम्बोमो एंड वीसा स्टेप्ड अप ब्रिलियंटली. वीसा ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एम्बोमो ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस. दैट डुओ वाज डेडली. If Bryan Mbeumo can recreate that with a new striker, if United buy him, or with Matthias Cunha himself, that's phenomenal. Because अगर आप 10-20 गोल ऐड कर लोगे यूनाइटेड की प्रीवियस सीजन की गोल टैली से, दैट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू देयर गोल डिफरेंस एंड मे बी दे कैन हेल्प देम विन सम गेम्स एज वेल. यूनाइटेड 15th फिनिश करी है, सो आई डोंट थिंक द फैंस देमसेल्व्स विल बी टू कंसर्न्ड कि यूनाइटेड कितना पैसा दे रही है. एट दिस लेवल अगर यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन जाती है, प्री सीजन भी जाती विद द सेम प्लेयर्स दैट वर प्लेइंग लास्ट सीजन, मे बी एक्सेप्ट जस्ट एडिंग Matthias Cunha, you can understand why fans would be angry and stuff. So I completely understand people who say कि नहीं, this price is justified. I think it's a crazy price, but everything is a crazy price. And if United feel he's worth 70 million, I have no complaints about it. Bryan Mbeumo might miss some games because of AFCON. Of course, I think वो Cameroon के लिए खेलते if I'm not mistaken. So he will miss some games. But I think Bryan Mbeumo is as sure shot a guarantee to work in the Premier League as any player. मतलब this guy has been getting around 15 goals and assists on average throughout his Premier League career. What more sort of guarantee do you want? So yeah, I think Bryan Mbeumo से United ने एक बहुत अच्छा player sign कर लिया. He is somebody that was wanted by Newcastle. He was somebody that was wanted by Arsenal to play as backup to Saka. But he backed himself. He wants to be number one and he wants to take on this Manchester United challenge. अभी तक as of recording this video confirmation नहीं आया है कि ये Brentford ने bid accept कर लिया है. But largely media में and briefs में यही है consensus that Manchester United will get their hands on Bryan Mbeumo. Whether this has happened because United were like, fine, it's time now, हमें pre-season के लिए जाना है, we need to get a player in, or it's because of the visa news कि अगर Newcastle ने visa को ले लिया, then Bryan Mbeumo will stay put at Brentford. Regardless, Manchester United have got their man. Now let's see what Man United do. एमी मार्टिनेज से लिंक्स हैं, बेंजामिन सेस्को से लिंक्स है, बट उनको मिडफील्डर की भी जरूरत है. What do they do? Let's see. So you let me know what you think about Bryan Mbeumo. Do you think he's going to replicate the last season from beast goal, 8 assist wala at Manchester United, propel them way up into the table? Do you think Manchester United need a striker to get back into the top 6, top 4 race? Let me know in the comments and I'll see you all soon. Tata, see you.